Welcome everyone. You are watching the channel Learning with Itishri and this is Itishri. In the previous class, we learned about parts of sentence. We learned that a sentence has two main parts, isn't it? One is subject, second one is predicate. Subject, predicate. Two main parts of a sentence, subject, predicate. And what about subject and what about predicate? जहाँ विषय रे आमे कहू से होची सब्जेक्ट ता विषय रे आमे जहाँ कहू सेटा होची predicate. And we learned to identify the subject and predicate in the declarative sentence in previous class. Today we will learn to identify subject and predicate in the interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Okay, so now let's see the examples. So these are the interrogative sentences. Now we identify the subject and predicate in interrogative sentence. Okay, let's see. First one is what troubles you. In this sentence, the what is the subject and troubles you is the predicate. A sentence में कौन देख ले? Interrogative sentence में what होची subject, troubles you होची predicate. Okay, and in the second sentence, what is your name? कहाँ विषय रे कुछ कहूचे हमें? कहाँ विषय रे कहूचे? It is obviously your name. So this one is the subject, and this one is predicate. तेणु देखा फर्स्ट सेंटेंस रे कोन हेची व्हाट ट्रबल्स यू एठी रहिची सब्जेक्ट फर्स्ट नेक्स्ट रे रहिची प्रेडिकेट किंतु ए सेंटेंस रे कोन हेची फर्स्ट रहिची प्रेडिकेट लास्ट रे रहिची सब्जेक्ट तेणु इंटरोगेटिव सेंटेंस रे ए प्रकार रो हुए डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे हम कोन देखुचे देखिथिले नॉर्मली सब्जेक्ट इन इट्स बिगिनिंग इन द सेंटेंस आरंभ रे थाए सेंटेंस रो आरंभ रे सब्जेक्ट थाए प्रेडिकेट सब सेंटेंस रो लास्ट पार्ट को थाए किंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट कोठी रही परिबो आमे एई एग्जांपल मानन करे देखिबा फर्स्ट रे हमें देखिले सब्जेक्ट फर्स्ट रे अछि प्रेडिकेट लास्ट को अछि सेकंड सेंटेंस रे हमें देखिले प्रेडिकेट फर्स्ट रे अछि सब्जेक्ट लास्ट रे को अछि थर्ड सेंटेंस से देखिया कोन का विषय रे कहउचे वेयर आर यू गोइंग का विषय रे कहउची निहाती यू विषय रे कहउची इट इज ऑब्वियसली यू सो यू इज द सब्जेक्ट हियर. Then what about this and what about this? Where are a part of predicate? And this one another part of predicate. In this sentence, you is the subject. This is in the middle position in the sentence. You एटा sentence रो मझी रे अछि. तो interrogative sentence रे subject रो position को जगह रे देखिला first रे रहउची, last रे रहउची, मझी रे भी रही पारुची. तो जदी मझी रे subject रहउची ताले एटा कोन a part of predicate. Predicate रो एटा गुटिए part, going another or remaining part of predicate. And subject is in the middle position. Okay, the next, can you meet me now? Now tell which one is the subject. Obviously it is you. Subject, you is the subject and this is one part of predicate and this is another part of predicate. Okay, the next, which of these books is yours? एठी के सब्जेक्ट कहा विषय रे कहउची बही
किंतु एठी कोन हे जे बही एक पूराटा होची सब्जेक्ट which of these books एही बही मानक भितरु तेनु ए पूराटा होची सब्जेक्ट आउ this one is predicate तेनु इंटरोगेटिव सेंटेंस रा में देखु जे सब्जेक्ट ता आरंभ रे भी रहउची शेष रे भी रहउची मझी रे भी रहउची आउ बड़ भी रहउची खाली व्हाट एटी सब्जेक्ट रहउची एटी व्हिच ऑफ दिस बुक्स सब्जेक्ट रहउची तो मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट भी हेई पारुची तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रो हमें एई भली भाबरे सब्जेक्ट आउ प्रेडिकेट बाछि पारिबा नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस ओके So these are the examples of imperative sentences. Just mark these sentences. Which one is subject in all these sentences? Do me a favor. Where is the subject? Do me a favor. ये सब sentence को कौन अर्थ बुझा पड़ुची? Do me a favor is a request. Go there is a order. Please help me. A request. Drive him away an order तो ये बड़ी रिक्वेस्ट बा ऑर्डर ओडिया रे हमें पढिचे आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य ताकू इंपेरेटिव सेंटेंस बोली कहउची इंग्लिश रे तो ये सब सेंटेंस रो हमें अनुरोध बुझुचे बा आदेश बुझुचे बा कोठी गोटे एडवाइस थिबो कोठी गोटे सजेशन थिबो सेही बड़ी सेंटेंस थिले हमें ताकू इंपेरेटिव कहबा तो वर्तमान देखा यार सब्जेक्ट किए व्हिच वन इज द सब्जेक्ट इन ऑल दिस सेंटेंसेस ये सब काम किए करिवो गो देयर यू गो देयर बट यू इज नॉट हियर तो ए सब सेंटेंस मानकर सब्जेक्ट होची यू you is the subject which is not given here but it is understood do me a favor means you do me a favor go there means you go there please help me means please you help me drive him away means you drive him away so you is subject here but it is not given so you is the understood subject in imperative sentence so if the you is subject then all this is it is predicate this one predicate this one predicate this one predicate so in the imperative sentence the sentence is only predicates okay the part of sentence only predicate part is there subject is you which is not given okay good next let's see the next example that is a exclamatory sentence now let's see the examples of exclamatory sentence and we identify subject and predicate in this sentence okay these are the sentences how wonderful what a nice chance what a terrible scene exclamatory sentences express our feelings बहुत डरी जाऊ बहुत आश्चर्य हो जाऊ बहुत खुशी हो जाऊ ए सब जिंस जो वाक्य सूचौ थाए ताकू आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहबा ओडिया रे आमे ताकू आश्चर्य सूचक वाक्य बोली कहिथा ए सब सेंटेंस रे कोन होची देखिबा एंड देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस रो शेष रे गोटे आश्चर्य सूचक चिन्ह दिया थाए ताकू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहउची ए सब सेंटेंस मानकर देखो हाउ वंडरफुल व्हाट ए नाइस चांस व्हाट ए टेरिबल सीन इट होचे एठी सब्जेक्ट इज होची verb but it and its subject and verb are omitted from these sentences so this much for this session we have learned that to identify the subject and predicate in the interrogative sentence in the imperative sentence and exclamatory sentence so this much for this session thank you all thank you for watching keep watching this channel if you like this video please hit the like button subscribe the channel and give me some suggestions comment in the comment box so that I will be motivated to make some new videos for you
Thank you all.